और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि तालिबान को तस्लीम करने का फैसला उनके इक़दामात पर मुनहसर होगा। अमरीका की पहली तरजीह तालिबान से वादों पर अमल दरामद करना है। एंटनी ब्लिंकन का अफगानिस्तान मीडिया को इंटरव्यू में कहना था, 14 अगस्त की शाम तक अशरफ गनी मरते दम तक लड़ने की बात कर रहे थे। सकूत काबुल अफगान हुकूमत और अफगान फौज की नाकामी थी। अमरीका 9/11 के जिम्मेदारों को सजा देने अफगानिस्तान गया था, अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे। We went to Afghanistan in the first place, and that was after 9/11 to deal with those who attacked us on 9/11 and to make sure to the best of our ability that they could never do so again from Afghanistan. And that effort was largely successful. Osama bin Laden was brought to justice a decade ago. The Taliban says it seeks international legitimacy and international support. And that will depend entirely on what it does, not just on what it says. And the trajectory of its relationship with us and with the rest of the world will depend on its actions. Now, the Taliban has made a series of commitments publicly and privately, including with regard to freedom of travel, with regard to combating terrorism and not allowing Afghanistan to be used as a launching point for terrorism directed at us or at anyone else. The international community has also set clear expectations of the Taliban. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।